હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। એટલે કે તમારા ઘરે આવતા છાપાઓ કે સામયિકો કે પછી ઓનલાઈન નેટ પરથી ગમે ત્યાંથી તમારે ચુટકુલે એટલે કે નાના જોક્સ તે વાંચવાના છે અને તમારા વર્ગખંડમાં રજૂ કરવાના છે। હું અહીં નમૂનારૂપ એકાદ બે ચુટકુલે રજૂ કરું છું। अमित कहे छे, पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बता रहे हो। त्यारे पहलवान कहे छे, हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। बीजो चुटकुलो छे एटले के जोक्स छे। टीचर कहे छे, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? छात्र कहे छे, जी सर, कीचड़ होती है। त्यार पछी एक हजू जोईए। पिता कहे छे, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा कहे, इसीलिए वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे, इसीलिए कहते हैं सोने की लंका, क्योंकि कुंभकर्ण सोता था ना। આવી રીતે તમે નેટ પરથી કે અન્ય જગ્યાએથી ચુટકુલે મેળવી અને લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીં આપેલો એક ફકરો છે। આ ફકરામાંથી આપણે મુહાવરા શોધવાના છે અને પછી તેનો અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। આપેલા ફકરાને આધારે આપણે આ મુજબ મુહાવરા શોધી શકીએ। 1, આંખો કા તારા, તેનો અર્થ થશે बहुत प्यारा। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। 2, कमर कसना, તેનો અર્થ થશે अच्छी तरह तैयार होना। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। 3, ईद का चांद होना, તેનો અર્થ થશે बहुत दिन बाद मिलना। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। 4, आस्तीन का साम, આપેલા મહાવરાનો અર્થ થશે કપટી મિત્ર, મિત્ર બનકર શત્રુ જૈસા વ્યવહાર કરના। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। 5, नजर चुराना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। 6, आग बबूला होना, તેનો અર્થ થશે बहुत क्रोधित होना। તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય, નોકર से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। આવી રીતે આપણે આપેલા ફકરા પરથી મુહાવરા શોધીશું, ત્યારબાદ તેનો અર્થ લખીશું અને વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। હવે प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 1, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। અહીં દાદાજીનું લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે અને વાક્ય ફરીવાર લખવાનું છે। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। 2, एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी એ શબ્દનું લિંગ પરિવર્તન કરી અને વાક્ય બનાવી શકાય, एक औरत ने मुझसे कहा। 3, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। 4, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। लिंग परिवर्तन करी वाक्य बनावी शकाय, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5, बारिश होने को देखकर मोर नाचने लगा। मोर शब्दનું लिंग परिवर्तन करी वाक्य बनावी शकाय, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। 6, जंगल में शेर दहाड़ रहा है।
શેર શબ્દનું લિંગ પરિવર્તન કરી વાક્ય બનાવીશું જંગલ में शेरनी दहाड़ रही है। 7 सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ शब्दનું લિંગ પરિવર્તન કરી વાક્ય બનાવીશું सेठानी दुकान में बैठी है। 8 अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक शब्दનું લિંગ પરિવર્તન કરી વાક્ય બનાવીશું अध्यापिका पढ़ रही है। 9 पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित शब्दનું લિંગ પરિવર્તન કરી વાક્ય બનાવી શકાય पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10 लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का शब्दનું લિંગ પરિવર્તન કરી વાક્ય બનાવીશું लड़की दुकान के पास खड़ी है। આવી રીતે આપણે રેખાંકિત શબ્દનો લિંગ પરિવર્તન કરી વાક્ય બનાવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં એક ઉદાહરણ આપેલું છે ઘર। ઘર શબ્દને આધારે 4 વાક્ય બનાવેલા છે। 1 मेरा घर सूरत में है। 2 मुझे अपना घर बहुत पसंद है। 3 मेरे घर में 3 कमरे हैं। 4 मैं अपना घर साफ रखता हूँ। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને 4 વાક્ય બનાવવાના છે। 1 बाग તેના પરથી 4 વાક્ય આ મુજબ બનાવી શકાય। 1 बाग में फूल होते हैं। 2 बाग में लड़के खेलते हैं। 3 मैं रोज बाग में जाता हूँ। 4 यह बाग सुंदर है। અહીં આપેલા વાક્યો સિવાય તમે તમને મનગમતા અન્ય વાક્ય પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ તેમાં બાગ શબ્દ આવવો જરૂરી છે। 2 નદી તેના આધારે 4 વાક્ય આ મુજબ લખી શકાય। 1 हम नदी में नहाते हैं। 2 लोग नदी में तैरते हैं। 3 नदी में नावें चलती है। 4 गंगा पवित्र नदी है। આવી રીતે તમે અન્ય વાક્ય પણ બનાવી શકો છો। 3 दोस्त તેના પરથી 4 વાક્ય આ મુજબ બનાવી શકાય। 1 गौरव मेरा दोस्त है। 2 मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। 3 मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। 4 जीवन में दोस्त होना जरूरी है। चौथो शब्द है पसंद તેના પરથી 4 વાક્ય આ મુજબ બનાવી શકાય। 1 मुझे गुलाब का फूल पसंद है। 2 दीदी की पसंद चमेली का फूल है। 3 माँ केवड़ा पसंद करती है। 4 सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। 5मो शब्द है कहानी તેના આધારે 4 વાક્ય આ મુજબ બનાવી શકાય। 1 मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। 2 मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। 3 गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। 4 बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દને આધારે 4 વાક્ય બનાવીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 5 कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। અહીં કહેવત અને તેનો અર્થ આપેલો છે। હવે આપણે એ કહેવતને આધારે વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકે ચર્ચા કરવાની છે। કઈ રીતે ચર્ચા કરવી તે હું અહીં નમૂનારૂપ રજૂ કરું છું અને આ ચર્ચા તમારે તમારા શિક્ષક કે તમારા મિત્ર સાથે કરવાની છે અને તમારી નોંધપોથીમાં લખવાની છે। 1 અકલબડી या भैंस આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે શરીર બડા હોને की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। હવે આપણે ચર્ચા આ મુજબ કરી શકીએ। शिक्षक कहे छे हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? एक विद्यार्थी कहता है गुरुजी कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। આવી રીતે ચર્ચા કરી શકો છો। શિક્ષક કહે છે હા इसीलिए तो कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस। ત્યાર પછી
બીજી કહેવત છે આસમાન સે ગીરા ખજૂર મેં અટકા. આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે એક કે બાદ એક વિપત્તિ મેં ફંસના. હવે આ કહેવતને આ મુજબ ચર્ચા કરી શકાય. शिक्षक कहे छे, गोपाल क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? त्यारे गोपाल कहे छे, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है. तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका. ત્રીજી કહેવત છે આયે થે હરિભજન કો ઓટન લગે કપાસ. આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે અચ્છા કામ છોડકર મહત્વહીન કામ મેં લગ જાના. હવે તેની ચર્ચા તમારા મિત્ર સાથે કે શિક્ષક સાથે આ મુજબ કરી શકાય. શિક્ષક કહે છે, ધવલ क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? धवल कहे छे, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे. बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला. आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लार्क बनकर जीविका चलानी पड़ी. एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास. આવી રીતે આપણે આ કહેવતને સમજાવી શકીએ. 4. જો ગરજતે હે વો બરસતે નહીં. આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે જો ડીંગ મારતે હે વે કામ નહીં કર सकते. તેની ચર્ચા કરી અને આ મુજબ લખી શકાય. શિક્ષક કહે છે, સલીલ क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? सलील कहे छे, गुरुजी तुम्हारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है. पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही वे लोगों की नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे. चुनाव हुए 2 साल हो गए. जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया. अब इसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक कहे छे, सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. 5મી કહેવત છે जैसी करनी वैसी भरनी. આપેલી કહેવતનો અર્થ થશે જો જૈસા કરતા હૈ ઉસે ઉસી કે અનુસાર ફલ ભુગતના પડતા હૈ. હવે આ કહેવતની ચર્ચા આ મુજબ કરી શકાય. શિક્ષક કહે છે, सूरज क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? ત્યારે सूरज કહે છે, गुरुजी अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था. महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की. फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. अब इसे हम क्या कहेंगे? मोहन कहे छे, जैसी करनी वैसी भरनी. આવી રીતે આ કહેવતના અર્થ અનુસાર જો કોઈ કિસ્સો હોય તો તે તમારે અહીંયા લખવાનો છે અને તમારા મિત્ર સમક્ષ રજૂ કરવાનો છે. અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.